ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕರ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಶಾನ್ ಹಾಗೂ ದುಲಾಲ್ ಓಪನರ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚವನ್ ಭಂಡಾರಿ, ಜಾನ್ಸನ್ ನಾಯಕ, ಗೋಟಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ. ಚುಕ್ಕೆ ಸತವನ್ನೇ ಎಸಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಹಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ಸನ್ ಕುಂದಾಪುರ. ಚವನ್ ಭಂಡಾರಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೆಲಿವರಿನ ಎಸಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಚವನ್ ಭಂಡಾರಿ ಲೆಗ್ ಬೈ, ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟ, ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ, ತರದ ಮೊತ್ತ ಖಾತೆ ಆರಂಭ. 1 without loss, the first over in progress. 8 over smash, second semi-final going on. Fans Cup 2024. ಚವನ್ ಭಂಡಾರಿ ಈ ತರವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರಾಜ್ಯ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ತನ್ಮೂಲಕ ವೀನಸ್ ಮೊಲೋಗ್ನೋ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮೊದಲ ಹುದ್ದರಿ ನೆಲಕಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆಶಾನ್ ಹುದ್ದಾರಿ ನೆಲಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆಶಾನ್ ಹುದ್ದಾರಿ ನೆಲಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಡುವೆ ರಾಜ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಲ್ ಅನ್ನ ಲಿಫ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಾಲಿಬಾಲ್ ತರ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 1-1 ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ, ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತರದ ಮೊತ್ತ 2. ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1, ಸ್ಕೋರ್ 2 for 1, 2-1.
ಎಸ್ಎಂಇ ಹಾಗೂ ಅನು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಕಿರಣ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಪ್ರಮೋಟರು ವೀನಸ್ ಬಲಾಗ್ನ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ್ರೆ ದಾಂಡೇಲಿ ಡ್ರೀಮ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ರಾವ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಪ್ರಮೋಟರು ಜಾನ್ಸನ್ ಕುಂದಾಪುರ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜಾನ್ಸನ್ ಮಾಲಕರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ ರವಿ ಹೆಗ್ಗಿದೆ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೋಕಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಪ್ಗಾಗಿ 4 ದಿವಸಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಲವ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಂಗಾಮ ಅಂತಿಮ ಹಂತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆಡಾಟ ಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಅವರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಬೌಂಡ್ರಿ. ಚವಾಣ್ ಭಂಡಾರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡುವೆ ಕೂಡ 4 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ವೀನಸ್ ಬಲಾಗ್ನ ಶ್ರೀಲಂಕಾ. ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ನೋ ಬಾಲ್, ಡೀಪ್ ಫೈಲ್ ಆಗಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಬೌಂಡ್ರಿ. 1+4+ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಉಚಿತ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖಚಿತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಪ್ ನಲ್ಲಿ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಸಚಿನ್ 11 ಮಾಲಕರು ಸಚಿನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀರೀಸ್ 25,000 ಇದನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಚಿನ್ ಫ್ರಮ್ ಸಚಿನ್ 11. ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನೋ ಬಾಲಿನ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ಟಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡ. ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 12. ಈಗಾಗಲೇ ಪಂದ್ಯಾಟಗೋಸ್ಕರ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಸಚಿನ್ ಇಲ್ವನ್ನ ಸಾಗರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತೆ ಲೋಕಿ ಕುಂದಾಪುರ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಬ್ಲಾಕ್ ಹಾಲ್ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು, ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೋಕಿ. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತಗಳು ಹಾಕಿದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 13. 13 for 1. The second over in progress.
ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೋಕಿ ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಓಟಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಂತ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2. ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2. ಸ್ಕೋರ್ 13 for 1, 13-1. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ 5,05,000 ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಟ್ರೋಫಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ 2.5 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಟ್ರೋಫಿ. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀರೀಸ್ 25,000 ಇದನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪಿಚ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ತಂಡ ಸಚಿನ್ 11, ಅದರ ಮಾಲಕರು ಸಾಗರ್ ಗೌಡ ಅವರು 25,000 ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀರೀಸ್ಗಾಗಿ. ಎರಡನೆಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 108 ಬಾಲಾಜಿ 411 ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಫೈನಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ LED ಅವರು ಇದ್ರೆ ಬರಬೇಕು, ಟೈಮರ್ ಅವರು, LED ಟೈಮರ್. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿತೀಶ್ ಮಂಡೇಲಾ, ನಿತೀಶ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಓಟಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿತೀಶ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದುಲಾಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅನ್ನಲ್ಲಿ ನೋವನ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ ಸ್ಕಾರ್ಲರ್ಗೆ ಬಾಗಿಲು ತಳ್ಳಿದ್ರು. ಒಂದೋಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ನಿತಿನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಡೆದ ಮೊತ್ತ 14. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು ಎಸೆತ, ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಗೂಟಗಳ ಹಿಂದೆ ರಾಜ್ಯ ಕಂಡ ಮತ್ತೋರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಅನಿಲ್ ಕಾರ್ವಿ. ಒಂದೋಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಜಾನ್ಸನ್ ತಂಡ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಸೂರಜ್ ನೀಡ ಕಾಯ್ದೆ ಉದ್ದನೆ ಆಟಗಾರ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಜಾನ್ಸನ್ ಅನ್ನ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ವಿಜಯದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಎರಡನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿತೀಶ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ
ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷ ಷಟ್ಕ ಆರಾಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಹಲೋ, 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಡಿಜಾಫ್ 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಡೆದ ಮೊತ್ತ 21ಕ್ಕೆ. 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ 21ಕ್ಕೆ 1. ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಸ್ಕೋರ್ 21 for 1. 4 ಓವರ್ಗಳ ತರುವಾಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಟಾರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ರಾಜಕುಮಾರ ಹಾಡು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈ ಓವರ್ ನಂತರ 4ನೇ ಓವರ್ನ ಆರಂಭ ಆದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಟಾರ್ಚ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೈಮ್ ಔಟ್ಗೆ, ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಟೈಮ್ ಔಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಟಾರ್ಚ್ಗಳನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ. ಎಸಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚವನ್ ಭಂಡಾರಿ, ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನುವಾನ್. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವರ್ಸಸ್ ಕುಂದಾಪುರ. ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸೂಪರ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಈ ಬಾರಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ, ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ. ನಿತೀಶ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ತನ್ಮೂಲಕ 2ನೆಯ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 21ಕ್ಕೆ 2. 21 for 2. The 4th over in progress. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಪ್ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 94ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆ. 30 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸದ ಸಂಸ್ಥೆ, 3 ದಶಕದ ಇತಿಹಾಸದ ಸಂಸ್ಥೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಸಂಸ್ಥೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ 49 ತಂಡಗಳ ಫ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡಿದ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಏಕೈಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ತದನಂತರ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ 8 ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಡಿಗರ ಸೇರ್ಪಡೆ ಟೆಲಿನಾ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ, ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ ಷಟ್ಕ ಆರಾಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತೆಲಿನ ಚೆಂಡನ್ನು ತೇಲಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೆರೆದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ರವಿರಾಜ್ ಆಚಾರ್ ಅವರ ಗೊಂಬೆ, ಮಂಗಳೂರಿನ ಗೊಂಬೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಚವಾನ್. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಸೆತ, ಬಲವಂತ ಮನವಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರೂವಾರಿಗಳು,
ಸೃಷ್ಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಾಲಕರು ಆದಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಶಿವ ಸಾರ್, ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಬಹಳಷ್ಟು ಶಾಂತ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ತತೆಯ ಒಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪೀಣ್ಯದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು, ಅಭಿವಂದನೆಗಳು. ನಡೆದ ಮೊತ್ತ 28, 28. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಲೈಟ್ ಗಳನ್ನ, ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವನ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಟಾರ್ಚ್ ಗಳನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಈ ಸಾಂಗು. ಇಡೀ ಪೀಣ್ಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು, ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು. ಎಲ್ರು ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸಿ.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಜೆ. ಸ್ಕೋರ್ 28. 28. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚವನ್ ಬಂದಾರಿ. ತೆಲಿನ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೆಲಿನ, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಿಲಾಜ್. ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸಿ, ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿರ್ಣಾಯಕರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ 4ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ವಿಜೇತರು ಯುನೈಟೆಡ್ ಬಾಲಾಜಿ ನಾನೋ ಇಲೆವೆನ್ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಗೂಟಗಳ ಹಿಂದೆ ವೈಫಲ್ಯ, ಬೌಂಡ್ರಿ ಬೈ ಮುಖೇನ 4 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 32. ಬಾಲಸುತ್ತಮತ ಹೊಡೆತ, ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸ್, ಷಟ್ಕ, 6 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತೆಲೀನಾ. ತಡೆದ ಮೊತ್ತ 38, 38. ಜಾನ್ಸನ್ ಕುಂದಾಪುರ, ಚವಾನ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಜೆ ಆಫ್. ದಯಮಾಡಿ ಡಿಜೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರಬೇಡಿ, ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಿ.
ಗುಡ್ ಬಾಲ್. ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ. ಗುಡ್ ಬಾಲ್. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಲದ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 4. ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4. ಸ್ಕೋರ್ 38 ಫಾರ್ 2. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಜಾನ್ಸನ್ ಕುಂದಾಪುರ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅಜಯ್ ರಾಜ್, ಮಂಗಳೂರು. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद शिवराज जी को। और जबरदस्त क्रिकेट श्रृंखला, सारे दर्शकों को देखकर मन प्रफुल्लित हो गया। हजारों संख्या में दर्शक इस वक्त इस स्टेडियम में मौजूद हैं। फ्रेंड्स कप 2024 सीजन दूसरा चल रहा है। ड्रोन आकाश में उड़कर बिल्कुल उस हर दृश्य को कैप्चर कर रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय, हालांकि ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला ही है, क्योंकि जब श्रीलंका की टीम आई है तो एक तरह से ऐसा लग रहा है कि भारत और श्रीलंका के बीच में यह मैच चल रहा है। टॉस जीतने के पश्चात श्रीलंका के कप्तान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, माफ कीजिएगा बल्लेबाजी करने का फैसला किया। शानदार बल्लेबाजी वो कर रहे हैं अब तक। दुलाज खेलिए गेंद और खूबसूरती के साथ गेंद को लॉफ्ट कर दिया और बिल्कुल उठाकर गेंद को लॉफ्ट कर दिया था लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में। फील्डर गेंद के ऊपर आ गए और बैट्समैन के पास समय था कि वो 1 रन को पूरा कर ले। शानदार मौसम है। रात के लगभग 8:40 हो चुके हैं और आकाश अंधेरों में डूबा हुआ फ्लडलाइट की रोशनी में मैदान नहा रहा है। दोनों बैट्समैन बहुत अच्छा कर रहे हैं। 2 विकेट्स गिर चुके हैं और रन अब तक बन चुके हैं 39 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। इस छोर से इस ओवर की अगली गेंद तिलेना स्ट्राइक एंड पर हैं और जसवंत गेंद को लेकर तैयार। कमेंटेटर बॉक्स छोर से बड़ा करारा संघर्ष इस वक्त देखने को मिल रहा है। ये गेंद लेग स्टंप के बाहर थी और तिलाना ने देखा, गेंद को परखा, जाने दिया, बल्ले को उठाया, फिर नजरों से गेंद का पीछा किया, लेग स्टंप के बाहर जा रही थी। इत्मीनान के साथ गेंद को जाने दिया। अंपायर ने सहमति देते हुए दोनों हाथों को फैलाकर संकेत किया कि वाइड है। 1 अतिरिक्त रन इस वक्त बन चुका है। रन बढ़कर पहुंच चुका है 40 पर 2 विकेटों के नुकसान पर। जसवंत की गेंद, तिलाना अभी भी स्ट्राइक एंड पर मौजूद हैं और जॉनसन इस वक्त विकेट की तलाश कर रहा है क्योंकि अच्छे खासे रन्स बोर्ड पर बन चुके हैं और विकेट फ्रंट फुट पर बहुत अच्छी तकनीक के साथ, बिल्कुल कॉफी बुक स्टाइल था। फ्रंट फुट को और बल्ले को साथ में ले आकर बल्ले का मुंह खोलते हुए बहुत शानदार स्टाइलिश अंदाज में गेंद को पुश कर दिया तिलाना ने और फील्डर की दिशा में रन लेने का अवसर बिल्कुल नहीं है। ऑफ साइड पर दायरे के अंदर 3 खिलाड़ी दिखाई पड़ रहे हैं। विकेट कीपर थोड़ा पीछे खड़े हैं क्योंकि लगभग 75-80 रफ्तार की गेंदबाजी जसवंत करते हैं। और विकेट उनकी गेंद फुल टॉस थी मिड और लेग स्टंप के लाइन पर बहुत इत्मीनान के साथ बगैर किसी दबाव के अब बल्ले का मुंह खोलते हुए गेंद को ऑन साइड की दिशा में कलाई के सारे से मोड़ दिया मिड ऑन की दिशा में तिलाना ने और 1 रन पूरा करते हुए अपने साथीदार को जिम्मेदारी सौंपी। कुल योग बढ़कर अब पहुंच चुका है 41 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। आई रिपीट 41 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। स्ट्राइक एंड पर तिलाना के साथीदार दुलाज आ चुके हैं। बाएं हाथ के बैट्समैन हैं, अंपायर से गार्ड ले रहे हैं और क्रिकेट में आप जानते हैं कि बाएं हाथ का बैट्समैन निश्चित तौर पर प्लस होता है टीम के लिए। उसके लिए गेंदबाज को कुछ अलग योजना बनानी पड़ती है। तो दुलाज स्ट्राइक एंड पर हैं और बहुत आक्रामक तरीके से वो खेलने के प्रयास में।
दिख रहे हैं, लॉफ्ट कर दिया गेंद को, खूबसूरत स्ट्रोक है और हाफ वॉली में लिया गेंद को, अच्छे स्ट्रोक के साथ दौड़कर 1 रन को उन्होंने पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ रन सब बढ़कर 42 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स, 42 फॉर 2। दोनों बैट्समैन स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुझे लगता है कि जो योजना बनाई थी श्रीलंका के टीम में वो सफल हो चुके हैं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म वो दे चुके हैं। और आखिरी गेंद को लेकर जसवंत और विकेट, फ्रंट फुट पर गेंद को खेलने का प्रयास था। इस बार तिलाना का ये स्ट्रोक, बल्ले का सिरा लेकर चूमती हुई बल्ले को गेंद स्लिप की दिशा से लुढ़कती हुई शॉट थर्ड मैन की दिशा में, 1 रन लेने का अवसर बैट्समैन के पास। एक गेंद अभी शेष बचा हुआ। इस 1 रन के साथ दोनों बैट्समैन का हौसला देखिए, एक दूसरे के साथ वो हाथ मिला रहे हैं और विश्वास इतना अटल है उनका कि वो किसी न किसी तरह से सम्मानजनक लक्ष्य को बना पाएंगे। दुला स्ट्राइक एंड पर जसवंत की गेंद और इस छोर पर दौड़ना शुरू कर दिया और विकेट ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी, जाने दिया, नजरों से गेंद का पीछा किया, फिर अंपायर की तरफ देखा, अंपायर ने दोनों हाथों को फैलाकर संकेत किया कि वाइड है। वाइड के इस रन के साथ रन साफ बढ़कर 44 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स, 44 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। दुलाज स्ट्राइक एंड पर हैं, जिस तरह से वो बल्ले को नीचे बार बार पटक रहे हैं, अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो विस्फोटक बल्लेबाज हैं, ऑन साइड पर स्ट्रोक खेलने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये गेंद उछाल दिया बहुत खूबसूरती के साथ, लेकिन फील्डर गेंद के नीचे आने का प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने गेंद को कैच कर लिया। शानदार कैच और इस कैच के साथ ही एक और विकेट का पतन हो चुका है और इस बेहतरीन कैच के प्रायोजक थे फ्रेंड्स कप 2024 सीजन 2। थैंक यू डीजे, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। शिवनारायण जी से, किरण जी से अनुरोध करूंगा कृपया थोड़ा सा साइड दें, क्षमा प्रार्थी। और इस बीच ये शानदार विकेट जो कि गिर चुका है, श्रीलंका का एक महत्वपूर्ण विकेट। दुलाज अगर काफी देर तक क्रीज पर रहते तो निश्चित तौर पर रनों का पहाड़ बनाने की क्षमता वो रखते हैं। और एक और नया ताजा ओवर जो कि शुरू होने जा रहा है। ओवर्स बता दें आपको, कुल मिलाकर संख्या ओवर की 44 for the loss of 3 wickets after the completion of 5 overs. 44 for 3. I repeat 44 for 3. 44 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। तिलाना स्ट्राइक एंड पर, लोकी उस छोर से गेंद को लेकर तैयार। तिलाना कुछ अलग अंदाज में पैरों को बहुत ज्यादा फैलाते हैं, बार बार बल्ले को पटक कर आक्रमण के लिए तैयार हो रहे हैं। उस छोर से लोकी की गेंद, ये गेंद लॉफ्ट कर दिया, गेंद को लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, गेंद दर्शक दीर्घाओं में निकल गई है। क्या जबरदस्त स्ट्रोक है 6 रनों के लिए और इस जबरदस्त छक्के के प्रायोजक थे फ्रेंड्स कप 2024 सीजन 2 डीजे। और इस छक्के के साथ ही 50 रन पूरे हो चुके हैं, 50 अप। You are watching Friends Cup 2024 presented by Bengaluru Friends. थैंक यू डीजे। फ्लिकर लाइट्स जो कि इधर उधर घूम रहे हैं, कृपया उसको लाइट को थोड़ा सा ऑफ करें। रनिंग लाइट, जी हाँ, थैंक यू सो मच। तो जबरदस्त छक्के के साथ 50 का आंकड़ा श्रीलंका की टीम ने पहुंच गए। 50 अप, 50 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। और तिलाना का वो प्रहार एक ऐसा कहना चाहिए कि गेंदबाजों के होश को उड़ा चुका है। क्या जबरदस्त स्ट्रोक उन्होंने लगाए। इस छक्के के साथ 50 के आंकड़े को श्रीलंका पूरा कर चुका है।
ये गेंद और लौकी की गेंद जिसको खेलना चाहते थे फ्रंट फुट पर लेकिन चूक गए और विकेट कीपर जाकर गेंद को झपट चुके हैं। रन लेने का अवसर बिल्कुल नहीं है। शानदार मौसम है। दर्शकों ने कुछ देर पहले जिस तरह से अपने मोबाइल लाइट्स को ऑन किया और उस संवेदनशील वातावरण को बिल्कुल एक तरह से कहना चाहिए कि दिल कहीं ना कहीं पसीज गया कि डॉक्टर पुनीत राजकुमार जो हमारे बीच नहीं है उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे परमात्मा। उस छोर पर लौकी गेंद को लेकर आ रहे हैं। यह गेंद ऑन साइड की दिशा में गेंद को लपेटकर खेलने का प्रयास पूरी तरह से विश्वसनीय स्ट्रोक नहीं था लेकिन बल्ले का निचला सिरा लेकर गेंद गई मिड विकेट डीप और मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में। जब तक फील्डर आकर गेंद को समेट पाते बैट्समैन के पास समय था तिलाना के पास कि वो एक रन को बटोर लें और इस एक रन के साथ रन बढ़कर 51 पर 51 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन इस वक्त निशांत आ चुके हैं और लौकी गेंद को लेकर तैयार। निशांता बाएं हाथ के बैट्समैन हैं। कद में कुछ बौने दिखाई पड़ते हैं। लाल टोपी पहने हुए, लाल कैप पहने हुए, लौकी कद काठी में लंबे। उस छोर से यह गेंद और ये गेंद बहुत हाई आर्म एक्शन के साथ ये गेंद थी और टिप्पा खाने के बाद गति परिवर्तन होकर थोड़ा सा डिवेट होकर ऑफ स्टंप के बाहर निकली। अचानक थोड़ा सा उछाल भी था और उसको निशांता समझ नहीं पाए। थोड़ा बल्ले को लगाना चाहते थे फिर अंतिम क्षणों में गेंद को जाने दिया जबकि लौकी गेंद को लेकर दोबारा तैयार। एक और गेंद। क्या शानदार स्ट्रोक है। क्या फील्डर इस गेंद को रोक पाएंगे? जी नहीं। शानदार कवर ड्राइव बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। इस बेहतरीन स्ट्रोक के प्रायोजक थे फ्रेंड्स कप 2024 सीजन 2 डीजे। थैंक यू डीजे। निशांता का यह स्ट्रोक बताता है कि वो कितने उच्च कोटि के बल्लेबाज हैं। उस छोर से लौकी की अगली गेंद। यह गेंद दोबारा ड्राइव करने का प्रयास लेकिन इस बार तिरछा खेलने के प्रयास में बल्ले का भारी मोटा सिरा लेकर गेंद गई थोड़ा पॉइंट बैकवर्ड की दिशा में। 1 रन लेने का अवसर निशांता के पास। इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। कुल मिलाकर 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 6 ओवर्स स्कोर इज ऑन 56 for 3। आई रिपीट 56 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। आखिरी 2 ओवर शेष बचे हुए हैं। 12 गेंदों का खेल शेष बचा हुआ है। 5 मिनट शेष बचे हैं। दोनों अंपायर को जी हां उनके ध्यान दिला दूं दोनों अंपायरों को 5 मिनट शेष बचे हुए हैं और 2 ओवर सभी शेष बचा हुआ है। 12 ओवर का खेल शेष बचा हुआ है। दर्शक जिस तरह से खचाखच भरे हुए हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो बड़े दिलचस्पी के साथ उत्साह के साथ इस उम्मीद में बैठे हैं कि कुछ रोमांच उनको देखने को मिले और 2024 सीजन 2 फ्रेंड्स कप का चैंपियन उनके सामने कौन आएगा इस उत्सुकता में वो बैठे हुए हैं और इस मैच में बड़ी दिलचस्पी के साथ वो इस मैच का आनंद उठा रहे हैं। जबकि नया ताजा ओवर लेकर कमेंटेटर बॉक्स छोर से गेंदबाज आ रहे हैं। नितेश आक्रमण पर आ रहे हैं। लगभग 30 गज के दायरे के अंदर 2-4 फीट अंदर से वो दौड़ना शुरू करते हैं। निशांता के लिए गेंद और उछालने का प्रयास किया, चूक गए, शरीर से गेंद टकराई और इतना आसान नहीं था। शॉर्ट ऑफ लेंथ नहीं थी और पूरी तरह से शॉर्ट नहीं थी। उसको थोड़ा ऑन दी अप खेलने का प्रयास, चूक गए और रन लेने का अवसर नहीं। नॉन स्ट्राइक एंड से आकर तिलाना ने उनको समझा दिया। उनके कान में 2 शब्द वो डाल रहे हैं और इस वक्त परिस्थिति अगर बात करें श्रीलंका मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ रहा है क्योंकि 50 का पहला पड़ाव वो पार कर चुके हैं। इसके ऊपर जितने सारे रन्स बनेंगे वो प्लस कहा जा सकता है। राउंड विकेट। एक और गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और निश्चित की गेंद बड़ी योजना के साथ वो जानते हैं कि ऑन साइड पर आक्रमण किया जा सकता है। लेंथ ज्यादा करते हुए गेंद की रफ्तार को भी कुछ ज्यादा बढ़ाया और ऑफ स्टंप के बाहर लगभग थोड़ा बाहर निकल गई। विकेट कीपर के हथेली में जाकर कैद कर ली गई और निशांता थोड़ा सा बीट हो गए गेंद को खेलने के प्रयास में। ज्यादा उनका प्रयास यही है कि वो ऑन साइड पर घूमकर प्रहार करें। इस छोर से नीतीश की गेंद को इस बार बहुत खूबसूरती के साथ उछाल दिया। एक बड़े लेफ्ट बैकलिफ्ट के साथ स्विंग के साथ लपेटे में लेकर 6 रनों के लिए।
कमाल का स्ट्रोक था, ऑन साइड के दिशा में लपेटकर, और निशांता का ये स्ट्रोक विश्वास दिखाता है श्रीलंका की टीम के बल्लेबाजी का। लपेटे में लेकर एक अच्छे बैकलिफ्ट के साथ ऑन दी अप गेंद को उन्होंने पुल किया। ये गेंद फुल टॉस से कवर के ऊपर से गेंद को लॉफ्ट कर दिया, खूबसूरत स्ट्रोक है, वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, और ये 4 रन। क्या कमाल का स्ट्रोक है। और जिस तरह से नीतीश गेंदबाजी कर रहे हैं, पहली गेंद पर जब छक्का लगा तो योजना बदली, अचानक एक फुल टॉस गेंद करने का प्रयास में ऑफ स्टंप के लाइन पर पनिश किए गए, और उस गेंद को निशांता ने कवर के ऊपर से, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लॉफ्ट कर दिया, खाली स्थान का उपयोग करते हुए 4 रनों के लिए। तो रन बढ़कर पहुंच चुका है 66 for 3। निश्चित की गेंद, ड्राइव कर दिया गेंद को, और सीधे फील्डर के दिशा में गई है, और गेंद जी नहीं, फील्डर को बीट करती बाउंड्री लाइन के बाहर, और ये 4 रन। इस शानदार चौके के प्रायोजक थे फ्रेंड्स कप 2024 सीजन 2। थैंक यू डीजे, थैंक यू। 70 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स, 70 for 3। जबकि इस छोर से नीतीश की आखिरी गेंद, वो काफी खर्चीले, महंगे साबित हो रहे हैं, योजना बना रहे हैं, लेकिन जब ही कभी कभार हो जाता है कि किस्मत आपका साथ न दें, तो आप ऊंट पर भी क्यों न बैठ जाए, कुत्ता आकर काट लेता है। और मुझे लगता है कि अच्छी गेंदबाजी करने का जो उनका प्रयास है उसमें वो विफल हो रहे हैं, और निशांता जैसे बैट्समैन सामने है तो कहीं ना कहीं विश्वास डगमगा जाता है। राउंड विकेट, ये गेंद ऑन साइड की दिशा में लपेट कर गेंद को उछालने का प्रयास, स्लॉग स्वीप के अंदाज में, थोड़ा सा पुल तोड़ा, थोड़ा सा स्वीप, लेकिन चौक गए, बच गए अंपायर के नजरों से। इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। तो कुल मिलाकर संख्या ओवर की बढ़कर पहुंच चुकी है 7 पर। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 7 overs, स्कोर इज ऑन 70 for the loss of 3 wickets, 70 for 3। I repeat, 70 for the loss of 3 wickets। आखिरी ओवर शेष बचा हुआ है। जबरदस्त संघर्ष इस वक्त जॉनसन कुंदापुरा को करना पड़ रहा है। शायद उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह से श्रीलंकाई टीम हावी हो जाएगी, और जिस तरह से बल्लेबाजी की जा रही है, कहीं ना कहीं ये अचंभित कर देती है कि किस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं और गेंद को किस तरह से कनेक्ट कर पा रहे हैं। कहीं कोई जादुई बल्ला तो उनके पास नहीं है, शानदार स्ट्रोक्स लगाए जा रहे हैं, और जो स्विंग के साथ लपेटे में लेकर उन्होंने गेंद को कनेक्ट किया, वो ज्यादातर सीमा रेखा के बाहर ही गया है, और इस वजह से शक कहीं ना कहीं, हालांकि एक जादू ही कहा जा सकता है। उस छोर से नया ताजा ओवर लेकर जशवंत आक्रमण पर आ रहे हैं, और स्ट्राइक एंड पर तिलिना आ चुके हैं। आखिरी 6 गेंदें शेष बची हुई हैं, 6 गेंदें शेष बची हुई हैं। क्या होगा उस छोर से? जसवंत की गेंद माफ कीजिएगा, तिलिना के लिए ड्राइव करना चाहते थे, फुल टॉस गेंद थी ऑफ स्टंप के सीध के थोड़ा सा बाहर, लेकिन पूरी तरह से बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए। बल्ले का सिरा लेकर भारी गेंद निकल गई शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में। तिलिना को अवसर मिला कि वो 1 रन को पूरा करें, और वैसे भी वो चाहते भी थे कि 1 रन तो कम से कम लिया जाए, क्योंकि स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन वो खूंखार, वो शानदार बल्लेबाज निशांता जो कि आ जाए। कद में कितने बौने हैं, लेकिन बल्लेबाजी की जो क्षमता है, उसकी जो प्रतिभा है, उसको सराहना होगा। उस छोर से गेंद को लेकर गेंदबाज तैयार, ये गेंद उछालने का प्रयास, चूक गए, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया, जल्दी आकर वो स्टंप्स को उड़ाने का संकेत कर रहे थे, लेकिन फिर दोनों बैट्समैन अपने क्रीज पर अटल, रन लेने का अवसर बिल्कुल नहीं है। तो आखिरी ओवर इस वक्त प्रगति पर चल रहा है। 71 for 3, आई रिपीट 71 for 3, आखिरी ओवर प्रगति पर चल रहा है। और निशांता स्ट्राइक एंड पर उस छोर से ये जसवंत की अगली गेंद योजना के साथ, बड़ा निर्णायक महत्वपूर्ण ओवर इस वक्त चल रहा है। ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, बीट कर गई बैट्समैन को, जोरदार अपील, और आखिर पत्थर को पिघलना ही पड़ा। उन्होंने संकेत किया कि बैट्समैन लेग बिफोर द विकेट है। साथ ही साथ अंपायर ने संकेत किया तीसरे अंपायर की दिशा में कि थोड़ा सा देखकर, कैप्चर किए गए दृश्य को रिप्ले में देखकर वो निर्णय निकालें, बैट्समैन बच गए या नहीं। राघु ब्रह्मावर जी हमेशा सुनिश्चित करना चाहते हैं।
तो अंपायर ने कहा कि बैट्समैन आउट हो गए। क्या बात है। और इस शानदार विकेट के प्रायोजक थे फ्रेंड्स कप 2024 सीजन 2। थैंक यू डीजे। क्या बात है। शानदार डांसिंग डॉल, लाफिंग डॉल ने अपना नृत्य दिखाया। इस छोर पर ईशांका आ चुके हैं स्ट्राइक एंड पर, लाल कैप को पहने हुए एक जबरदस्त विकेट प्राप्त कर लिया। उस छोर पर जसवंत ने आखिरी ओवर प्रगति पर चल रहा है। ईशांका स्ट्राइक एंड पर पैरों को फैलाकर बैकफुट थोड़ा सा ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर टच किया और देखिए ड्राइव कर दिया गेंद को। ऑफ स्टंप के लाइन के बाहर थी, लेंथ में ज्यादा थी और पूरी ताकत के साथ गेंद को प्रहार करना चाहते थे, लेकिन गेंद जमीन से सरपट लुढ़कते ही लगभग लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में जा चुकी है। इतना समय था दोनों बैट्समैन के पास कि वो छोर को बदल दें और उसके पश्चात तिलिना स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। तिलिना क्या कुछ कर पाते हैं। कुछ एक गेंदें बची हुई हैं, मुझे लगता है कि 2 गेंदें शेष बची हुई हैं। क्या तिलिना इन 2 गेंदों में कुछ आक्रामक स्ट्रोक्स लगाकर रनों की रफ्तार को क्या और तेज कर पाएंगे। जबकि उस छोर पर गेंदबाज के ऊपर एक चुनौती है कि 2 गेंदों को सिंगल्स अगर जाते हैं तो कोई तकलीफ ना होगी, लेकिन आक्रामक स्ट्रोक्स न लगे। फुल टॉस गेंद थी, उछाल दिया गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में। फील्डर गेंद के नीचे, उन्होंने झोली को आगे किया, कैच कर लिया। शानदार कैच के साथ ही एक और विकेट। डीजे मुश्किल नहीं, लेकिन चौका छक्का न लगे इस प्रयास में। जसवंत की गेंद ऑन साइड पर पुल करने का प्रयास किया, 1 रन चुरा चुके, तेज कदमों के साथ दूसरा रन दौड़ना शुरू किया और नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा में थ्रो हो चुका है। तीसरे रन के लिए दौड़ लगाई है। क्या बात है। 3 रन तेज कदमों के साथ दौड़कर पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने, जहां पर मुश्किल से 1 रन बनने वाला था। इसीलिए क्रिकेट को कहा जाता है कि ये अनिश्चितताओं का खेल होता है, इसमें कुछ भी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। तो कुल मिलाकर निर्धारित 8 ओवर के समाप्ति पर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 8 ओवर्स स्कोर इज ऑन 75, यानी कि 76 का टारगेट है। 76 रनों का टारगेट जो कि सेट किया है। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू। तो इस प्रकार 8 ओवर निर्धारित समाप्त हो चुके हैं और निर्धारित 8 ओवर के समाप्ति पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंकाई टीम ने 75 रनों को बनाया। 76 का टारगेट उन्होंने रखा है विपक्षी टीम को, यानी कि जॉनसन कुंदापुरा को। अब 8 ओवर के पश्चात नियम के अनुसार विवरण में थोड़ा सा बदलाव होगा, लेकिन जाते जाते मुझे लगता है कि अगला मैच अवसर मिले न मिले, इस मौके का मैं सदुपयोग करना चाहता हूं। मुझे आमंत्रित करने के लिए श्री रेणु गौड़ा जी, श्री किरण गौड़ा जी, उनके तमाम साथियों को मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। जिस तरह से बड़े प्यार से, स्नेह से आपने मुझे आमंत्रित किया पिछले साल की तरह, इसलिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके अलावा कमेंट्री पैनल में जितने मेरे मित्र थे, प्रशांत जी, विनय जी, शिवनारायण जी और सुरेश जी, उसके अलावा अरविंद जी, इन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं। और कुणिगल मंजू, जिनको कौन भुला है, उनको कौन भूल सकता है, वो तो बिल्कुल अलग अलग क्रिएटिविटी में लगे रहते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स के जितने सारे मित्र हैं, जिसमें खास तौर पर रंजीत, युवराज
और संपत जिन्होंने हॉस्पिटैलिटी में कोई कमी नहीं रखी, मेरा सहयोग किया और जो सेवा भाव उन्होंने दिखा दिया, मैं उसके लिए गदगद हूं। हृदय से उनका आभार प्रकट करता हूं और उम्मीद करते हैं कि सफल श्रृंखला एक यादगार ऐतिहासिक क्रिकेट श्रृंखला बने। रेणु गौड़ा जी को एक और बात बहुत बहुत धन्यवाद। सागर भंडारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उनका आलिंगन निश्चित तौर पर स्नेह को जताता है, बताता है। उनका भी भविष्य उज्जवल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓ ಟು ಶಿವನಾರಾಯಣ್ ಐತಾಳಕೋಟ ಸರ್. ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸೀಸನ್ 2 ಅಂತಿಮ ದಿನ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಮಹನೀಯರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪಿಚ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೂಡ ಸಚಿನ್ 11 ಇದರ ಸಾಗರ್ ಗೌಡ ಅವರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಸಚಿನ್ 11. ಅದರ ಸಾಗರ್ ಗೌಡು ಅವರನ್ನ ನಮ್ಮ ರೇಣುಗೌಡರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರೇಣುಗೌಡರು ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಕ್ಕೆ ನೀಡಿ ಹಾರ ಹಾಕಿ ಅವರನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ BM ಬಳ್ಳಾರಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮೇಗೌಡರನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಪರಿಸರ ಹಿರಿಯ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ರೇಣುಗೌಡರು, ಕಿರಣ್ ಗೌಡ್ರು, ಗಿರೀಶ್ ಗೌಡ್ರು ಅವರ ತಂದೆಯವರು ಕೂಡ ಆದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮೇಗೌಡರು ಡಾಕ್ಟರ್ BM ಬಳ್ಳಾರಿ ಅವರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶಾಲನ್ನ ಹೊದಿಸಿ ಹಾರವನ್ನ ಹಾಕಿ ಸ್ಮರಣಕ್ಕೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ 25,000 ನೀಡಿದವರು ಶ್ರೀಯುತ ಸಾಗರ್ ಗೌಡ ಸಚಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪರವಾಗಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತವರು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಬಿರಾದರ್ ಅವರು ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮೇಗೌಡರು ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಕೂಡ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸದಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಬಿರಾದರ್ ಅವರನ್ನ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ಮರಣಕ್ಕೆ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೋರ್ವ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೋರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ಸಕಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಸುವಂತ ಶ್ರೀಯುತ ಹೇಮಂತ ಗೌಡರನ್ನು ಕೂಡ ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮೇಗೌಡರು, ಡಾಕ್ಟರ್ BM ಬಳ್ಳಾರಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿರಾದರ್ ಅವರು, ನೀವು ಬನ್ನಿ. 3 ಜನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಮಂತ್ ಗೌಡರನ್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಕಲೇಶ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಹೇಮಂತ್ ಗೌಡರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಅವರನ್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಗೌರಮ್ಮ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಾಮೇಗೌಡ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯವರು, ಗೌರಮ್ಮ ಅವರು ಗಾಯತ್ರಿ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಅವರನ್ನ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು, ಸ್ಟಾರ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ನ ಮಾಲಕಿಯರು ಆದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಅವರನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿನ ವತಿಯಿಂದ.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Commentary box. Thank you, Shunara Naitar. Hello and welcome back to this second semi-final of Friends Cup 2024, presented by Bengaluru Friends Sports and Cultural Association. A big task in front of Johnson Kundapura here. 79 is the target. What a fabulous batting performance we have seen in the innings of team Venus Bologna Sri Lanka team. Their captain, after winning the toss, he had decided to bat first, and the batter Telina scored valuable 26 runs, and Ishanta scored 19 runs contributed by him, which has helped them to reach a respectable target of 79 here. Meanwhile, the two openers for Johnson Kundapura are Raja and Pradeep in the middle. Raja is batting on 2, Pradeep is batting on 4. So end of the over number 1, after the completion of first power play over, Johnson Kundapura team were able to score only 7 runs. 69 more runs required for their team to win this match in the remaining 7 overs. This is a very difficult target, but anything may happen here. Everything depends on the big gun of Johnson Kundapura, Raja Saligrama. He has to play his natural game. Raja Saligrama has to be there till the end in order to win this match. So you are watching the second semi-final of this Friends Cup 2024. We are in the final day, and after this match, the big finale, the mega final of Friends 2024 will be played in this ground. Already Balaji 11 Nanu from Chhattisgarh team have entered into the finals. We'll have to wait and see which team is going to win this match and will become the second semi-finalist here. The winners of this tournament will fetch a cash prize of 5,05,000 with the attractive Friends trophy, and the runners-up team will get 2.5 lakhs as the cash prize with the runner-up trophy. Second power play over. Short of end delivery, batsman goes for a big one. Ball is in the air, but the ball safely landed away from the reach of the fielder. Two fielders were after that ball. Since it was a power play over, all the fielders were inside the ring. Meanwhile, the batter is safe, no damage done. A good running between the wicket here between Raja and Pradeep. Pradeep was able to complete the second run without any problem. So 2 more runs have been added to the total of Johnson Kundapura team, which takes their full score to 9 on the board. So you are watching the second semi-final match of Friends Cup 2024 here at Pina. Terrific atmosphere. Crowd have come in large number to witness this tournament, and we would like to convey our sincere thanks to all the cricket lovers, all the supporters, and all the well-wishers who have made this tournament a successful one. Here's the next delivery from the bowler. That's a very fine delivery there, which beats the batsman. The ball went straight to the hands of the wicket keeper. The ball pitching on the off stump, and batsman Pradeep not getting the line of the ball. On that occasion, wicket keeper collects the ball neatly, so no chance of getting any score over there. Dot delivery there by the bowler Mohan. Once again, the ball is in the hands of the bowler Mohan. We come back to Mohan from the commentator's box end. Goes away from us. Bowls this one to Pradeep, the right-handed batter. Loud appeal there. Loud appeal for leg before the wicket, and umpire's finger goes up. Umpire Swaroop Gowda Tirthahalli has no hesitation in raising his finger. His finger goes up. First wicket has gone down for Johnson Kundapura in the second over of the innings. Pradeep departs.
Electrifying atmosphere. Have a look at the crowd. It's a jam-packed stadium here in Pina, and we are in the final day. Only 2 matches are pending. We are in the second semi-final. ಹಲೋ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಹಿಂದಿ ವೀಕ್ಷಕ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಅಂತ ಈ ಬಾರಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಹಿಂದಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿರಣಗಾರ ಅಜಯ್ ರಾಜ್ ಮಂಗಳೂರನ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ರೇಣುಗೌಡರು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಹಾರವನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ಮರಣಕ್ಕೆ ನೀಡಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಜಯ್ ರಾಜ್ ಮಂಗಳೂರು. Back to the live action. The bowler continues here. The bowler Mohan is bowling with very, very good line and length. He's not giving any room for the batters to play here, and he has to maintain the same line and length throughout his spell now. And as far as Johnson Kundapura is concerned, they can't afford to lose any more wickets. They must keep their wicket intact because they have already lost the key player, the wicket of Pradeep here. Now Raja will have to take the full responsibility of this game. Well, wanted to step out quickly and wanted to pull the ball onto the onside, but that ball kept very low and the batter misses it. No runs taken there. I mean, 1 run has been taken. Meanwhile, score moves on to 10 here. Ten on the scoreboard with 1 wicket down. Johnson Kundapura. Over number 2 is in progress. 76 is a target for the team. Mohan continues. Bowling in the over the wicket fashion. That's a very fine delivery there. The pace deceives the batsman. Ball defrauds the batsman and directly into the wicket keeper's baggage. The batter had no clue about that ball whatsoever. Meanwhile, umpire has referred it to the third umpire here to check whether it is a wide ball or not. Harish is the newcomer. Raja Saligrama is the opener batsman who is batting on 1. The man out is Pradeep for 6 here. Wide call by the third umpire. Third umpire says it's a wide ball. So 1 extra run will be added to the total here. With that extra run, the scorecard of Johnson Kundapura now slowly moves on to 11. Very slow start for Johnson Kundapura. They know the target is very huge, but they have already lost a very important wicket of Pradeep, and they have slowly started feeling pressure now because Venus Sri Lanka have given a big target, a huge target of 76 runs. Mohan for the last time in this over. Right arm over the wicket passes the umpire, bows this one to the left-hander. Batsman wanted to pull the ball onto the onside. Once again there was a loud appeal there, loud shout by the fielders, all the fielders as well as by the wicket keeper. But umpire Swarup Gowda Tirthahalli says not out, so no damage done, no addition to the total. Score still remains on 11 with 1 wicket down. So 2 overs gone after the completion of 2 overs. It is 1-1 on the scoreboard with 1 wicket down, and you are watching the second semi-final match of Friends Cup 2024, proudly organized by Bengaluru Friends Sports and Cultural Association under the leadership of Renu Gowda, Kiran Gowda, Sagar Bandari, and the entire Friends team, Friends Bengaluru team. We will have to really appreciate the entire Friends
Bengaluru team in organizing such a wonderful tournament in the history of Karnataka tennis cricket. This is the second season. Last year also we have witnessed a fantastic cricket tournament, and one more cricket tournament is reaching the milestone here. Sanju, the new bowler, is ready to bowl from the far end to the right-handed batter Raja. I beg your pardon. Harish is the man on strike. Raja Saligrama is at the non-striker's edge. First ball is a dot delivery there by Sanju. The meantime, ball is in the hands of the bowler. Sanju, after making some change in the field placement, is all set to bowl the second delivery with a long run up from the far edge. He will be passing umpire Raghu Kadur. Here is the next ball. That ball kept very, very low. Surprised the batsman. The batsman wanted to go for a big hit, but misses it completely. That ball keeping low. Surprised the batter Harish. Missed the line of the ball completely. Comprehensively beaten. The ball defrauds the batsman, and the rest of the job is done by the wicketkeeper. No runs resulted here. Dot delivery there by Sanju. Sanju is bowling pretty good here. Is already 2 dot balls so far in this over, and he's trying to put pressure on the opposition side. Every dot ball will put more and more pressure on the batters now. Sanju bowls this one to Harish. Harish flicks the ball onto the onside, turned away the ball nicely to the deep mid wicket region. There is a protection, so batter will have to satisfy with just a single here, not more than that. So Harish gets a single, and he has given the strike to the batsman Raja Saligrama now. Raja Saligrama is a dangerous batsman, one of the proudest player of Johnson Kundapura. Very, very experienced player. Explosive batter. Sanju to Raja Saligrama. That's a very fine delivery there. Almost like pitching like a Yorker delivery. Pitching right in the block hole. The bowler Sanju is bowling in the right spot with a tight line and length. He is giving high priority for the direct and accurate bowling here. As a result, the batters of Johnson Kundapura are not getting any big boundaries or sixers. We haven't seen any boundaries or sixers so far in their innings. Things are slowly down. Runs are dried up for Johnson Kundapura. Harish, watching the field pace carefully, will face the bowler Sanju. So far so good for Sanju here. Everything is good going for Sanju, the bowler. Continues the over. In the right arm over the wicket fashion, similar delivery there. Again the ball kept very, very low. As I mentioned earlier, Sanju is bowling in the right spot. He's bowling perfectly straight to the wicket. Wicket to wicket bowling. He has not given any runs in the form of extras so far. What an economical bowling there by Sanju, and he's trying to put all kind of pressure on the batters of Johnson Kundapura here. Last ball of the second over. Third over is in progress. I beg your pardon. Again, similar delivery and similar result here. Beaten comprehensively. The pace deceives the batsman. Very good over from Sanju has come to an end. In this over, Sanju just conceded only 2 runs. Even though he has not picked up any wickets, he has just given away 2 runs in that third over. So as a result, over number 3 completed after the completion of 3 overs. Johnson Kundapura are now 13 for the loss of 1 wicket. "63 more runs required for Johnson Kundapura team to win this match in the remaining 5 overs. 30 balls to go, 63 runs required. They need a run rate of more than 12 per over. Not a easy task, but anything can happen here. As long as Raja is there, definitely they have a hopes to win this match.
Let's see what kind of knock he's going to play. Raja Saligrama knows that it is a very crucial game for them to win and enter into the final. So he has to play his natural game now. Can Raja Saligrama produce some big hits in this over? Let's see whether this over is going to become a productive over for the team Johnson Kundapura. Johnson Kundapura is a team from coastal Karnataka, that is from Kundapur. Recently they had they had entered finals twice. One is in Venkatramana Pitrodi tournament in Udupi, and after that in Udupi Nejaru team tournament. They had become the runners. Meanwhile, Raja Saligrama goes for a big one. He played the shot over the head of the fielder onto the onside. Good piece of fielding there. Very, very good piece of fielding there by the fielder who was standing in the mid-wicket region. That was a long chase for him. The ball was almost traveling towards the long off fence for a boundary, but good presence of mind. He was very quick, collects the ball and throws it back to the bowler, and he has saved a couple of runs for his team here. Milina the bowler continues from the commentary box bench to Raja Saligrama, one of the big hitter. Well, he goes for a switch hit here. It could be 6. Yes, it is. Biggie. The batsman Raja Saligrama started showing all his caliber here. This is the kind of batting Johnson Kundapura need. Johnson Kundapura desperately need big hits now in order to accelerate their score and to come back at this game. Let's see how they are going to bounce back. With that huge 6, their score now jumps up to 21. After 3.5 overs, 21 runs on the scoreboard for the loss of 1 wicket. Johnson Kundapura chasing a target of 76 runs. Can he go for one more? This is going to be very interesting now. Milina to Raja. This time that ball kept very low. Once again, Raja Saligrama attempted for a switch hit. He wanted to place the shot in the reverse manner, but found complete failure in playing that one. There is no connection with the bat and ball. The ball went straight to the hands of the wicketkeeper, and wicketkeeper has returned the ball back to the bowler here. Ball is in the hands of the bowler, Milina. Milina for the 5th time now. With a long run up, Milina bowls in the round the wicket fashion. Once again, ball wraps onto the pad. Ball hitting the legs of Raja Saligrama. There was a loud shout, loud appeal for leg before the wicket by all the players. And umpire Swarup Gowda is very strict. He says not out. Score remains on 21. We are in the 4th over of the innings. 76 is the target for Johnson Kundapura to win this match and to enter the finals. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ SRB ಲೈವ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ 14,000 ಲೈವ್ಸ್ ಆಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ವೀಕ್ಷಕರು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಈವರೆಗಿನ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದೆ. SRB ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಒಂದಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಪ್ 2024 ಅಭಿನಂದನೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಪ್ಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ SRB ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ. Yes, we would like to appreciate the entire team of SRB Sports who have done an excellent job in the live streaming, live coverage. What a wonderful tournament here. And SRB Sports were the broadcast partners, and people from all corners of the world are watching each and every live action of this tournament from the last 4 years. ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ LED ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈವರೆಗಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ 41,915 ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು SRB ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈವರೆಗಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ SRB ಕೂಡ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. So we got a news here that 41,967 viewers have watched SRB Sports. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ರುದ್ರೇಗೌಡರು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ.
4 overs gone. So change in the commentary position. It's going to be Arvind Manipal to continue the further commentary. ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಎಸೆಗಳು 54ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 24 balls to go, 54 runs to get now. So thank you very much, Suresh Badje. And meanwhile, 54 to get from 24 balls, 24 ಎಸೆಗಳ ಮುಂದೆ 54ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಜಾನ್ಸನ್. Raja Saligram on strike now. An excellent batting performance in the first innings of the second semi-final play. Johnson Kundapura chasing down 76. If they manage to get that total, if they manage to cross over the line 76, that is going to be the new record in the tennis ball cricket history. And for that, Raja Saligrama's batting performance has to be delivered. Beautifully bowled again. Dot delivery continues. 22 balls, 54 to get. Friends Sports and Cultural Association Bengaluru. For the second time, they have organized one of the best memorable and fabulous prestigious international tennis ball cricket tournament here at second stage Pina ground. Well played on the onside. He finds a field placement in the deep. Just a single run added to the total. With that single run score moves up to now 23 for the loss of 1 wicket here. 16 teams participated. 4 days cricket festival, cricket carnival, and meanwhile second semi-final, second innings in progress. 76 to chase. 53 ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 22 ಎಸೆಗಳ ಮುಂದೆ. 53 from last 22. Lofted, it's gone into the crowd, it's all over. That's a biggie on the onside. Well played too on that occasion. Well, that's a lovely sweet middle of the bat. That touch is actually expected from the batter, and that occasion he was not disappointing anybody in the crowd. It goes for a big one. 6 to the total here. Score moves up to now 29. ಮೊತ್ತ 29. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಸಾಗರ್ ಬಂಡಾರಗಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅರ್ಜುನ್ ಪ್ರಭು ಅವರ ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಅರ್ಜುನ್ ಪ್ರಭು ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ. $29 runs on the board here. That one lofted again. Well, 3-4 fielders underneath the ball here. And he takes the catch. Harish Mangaluru looking to play a big stroke on the onside. And finally, it's been a very, very good catch in the outfield. Running catch taken successfully, finished by the field placement. And that's the end of the wicket number 2 for Johnson Kundapura. 29 for the loss of 2 now. 29 ಓಟಗಳಿಗೆ ಎರಡನೇ ಹುದ್ದೆಯ ಆಘಾತ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈಗಾಗಲೇ
ಯುವ ವೀಕ್ಷಕಗಾರ ರಾಘು ಮಡ್ಪಾಡಿ ಕೂಡ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ. 19 ಎಸೆಗಳ ಮುಂದೆ 47ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 47 from 19 balls here. Big man, dangerous batsman departs, and Sujit, the last match hero, he's in now. He's into the crease for the Johnson team. Sri Lankan team performed so well throughout the tournament. They're in the second semi-final battle. Winners from Sri Lanka versus Johnson Kundapura. Johnson chasing down 76. Required runs 47 of 19 balls. Last ball of the over to come now. Sujit, the left-handed batter, will be on strike. Can he look to play one big one on the onside? No, clean ball, great delivery, beautifully ball on that occasion. Magnificent bowling performance by him. And 2 wickets in 2 deliveries for him as well. End of the over number 5. And still they need 47 from 18 deliveries. 18 ಎಸೆಗಳ ಮುಂದೆ 47 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 29 remains on the board. End of the over number 5. 3 wickets down. 5 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. 29ಕ್ಕೆ 3 ಜಾನ್ಸನ್ ಕುಂದಾಪುರ. 18 ಎಸೆಗಳು 47 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 47 from 18 deliveries. And we would like to thank all the sponsors as well as supporters who have actually supported, contributed directly and indirectly for the success of this Friends Trophy 2024 cricket event. And we are thanking to them in one word on behalf of the Friends Sports and Cultural Association Bengaluru. Back to the live action. SRB Sports live telecast in the YouTube channel. Meanwhile, 14,000 viewers witnessed, watched this competition. For them, lot of thanks on behalf of the Friends Trophy now. 47 from the last 18 deliveries. Raja Saligrama still fighting hard at the crease. Well ball. That was a hit wicket, I think. Yes. He started to walk back, and that is at the end of the big man's innings here. Raja Saligrama's fighting innings, fight back is actually over in this innings so far against Sri Lankan's Venus team. 17 balls left and 47 away from the victory. Johnson Kundapura team played superb cricket. In the semi-final, they are chasing the massive total of 76. Just a little while earlier, they have lost the wicket of Raja Saligrama. To talk about the Friends Club Bengaluru, over the last 30 years, it has been established, started in 1994, and over the last 30 years period, it's been absolutely magnificent journey, dream journey for them. Many prestigious tournaments they have won, and recently Sagar Bandari is being represented in the ISPL cricket tournament, and he's been a part of the winning team as well in that tournament as well there. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಶಮೀರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಪುರ ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿನ 40+ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಮಾಲೂರು ಚಂದ್ರು ಅವರು ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. White signal by the umpire. Bit of miss by wicket keeper. Gone back for a single one extra there. 1+1. (31 runs on the board here. 3 wickets down. Oh, that's going to be another fuller and delivery outside after another miss by wicket keeper on that occasion. Should be an extra run, I think. Yes, by signal by the umpire. Match officials, umpires officiated throughout the tournament. Here we are with their names: Swaroop Tirthahalli and Raghu Kadur Brahmavara and Madhu from Mysore. Ibrahim Atradi, all qualified umpires actually officiated in this tournament. Down the wicket he comes, and they're trying to play that one on the onside. Beaten comprehensively. Dot ball. Commentators Shivana Naital Kota over the last 34 years. He started his cricket comment in 1991. Then Prashant Ambalapad in 1999-2000. He started his cricket commentary. Vinaywood Jawar in 2003. Ajay Raj Mangalore over the last 25 years. And Suresh Bhatt from
Mulki Mangaluru, joined for a commentary purpose. And meanwhile, official scorers Naim, Sachin and Sudarshan. Thanks to them on behalf of the Friends Trophy as well here. Ball, nicely balled again. Length ball, just close to the off-stump channel. Yorker and delivery on that occasion. Beautifully balled by Akhil. Well, things are actually under control on the Sri Lankan side. Sri Lanka winners team played superb cricket. One team disappointed in the morning session. They lost the quarter final. One team kept their hopes alive, keeping themselves in the hunt in the semi-final against Johnson. Lower full toss delivery, plied away on the offside. He gets all his singles. Singles are not enough to meet the target here. 76 they're chasing down. They need some big hits here. Score moves up to 34 for the loss of 3. Tanamota 34ಕ್ಕೆ 3. Good bowling, nicely bowled again. Akhil has been a part of the successful bowling performance, and that's the end of the over number 6. 6 gone. 35 for the loss of now. 4 wickets. 6 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. ತಂಡ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 35ಕ್ಕೆ 4. ಇನ್ನುಳಿದ 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 41 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. 12 ಎಸೆತಗಳು 41ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಜಾನ್ಸನ್ ಕುಂದಾಪುರಕ್ಕೆ. 41 from the last 2 overs play. Winners from Sri Lanka here in Bengaluru for a Friends Trophy. They have participated with a strong team, played superb cricket. It's in the air, caught behind on that occasion. Yes, caught behind. Another wicket goes down, 5 down for 35. 41 11 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹನ್ನೊಂದು ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 41 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಜಾನ್ಸನ್ಗೆ. So new batter Anil Karvi is in now. Winners from Sri Lanka in this Friends Trophy impressed everyone with ball and bat. And the super fashion Sri Lankan team lost the quarter final. And a big top team, Prakriti National, losing the semi-final. One ball, no runs, 10 balls, 41 away. 10 ಎಸೆತಗಳು 41ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. We are thanking today Friends Sports and Cultural Association for organizing, conducting, presenting Friends Trophy 2024 here. 10 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 41 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 41 from 10. Nice bowling, no connection, no problem. Goes for the directed, just wide of the stumps on that occasion, leg bicycle from the umpire. 40 more runs to get from the last 9 balls. Johnson, Kundapura, all the young, promising, talented players in the batting and bowling performed so well till quarter final. In the semi-final, bowling card disappointed for them. 75 for winners, 76 to chase. Now 9 balls left in the equation, 40 more to come. Lofted on the onside, finds a field placement in the deep. 39 from 8. 8 ಎಸೆತಗಳು 39 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. Consecutive boundaries and sixes, raining boundaries and sixes, that is what required, exactly required for the team. 8 balls, 39 away from the victory in the second semi-final stage of this beautiful, magnificent cricket tournament. Nicely played again, nicely timed stroke being delivered by him. Still, he's got only single. Runs on the board now.
38. 38 more to come, some 7 balls. Last ball of the over to come. 7 ಎಸೆತಗಳು 38ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 38 from 7. Can he look to play one big one? Can he clear mid-wicket or a long on range so that he can give so much good batting entertainment to all the cricket viewers here at second stage Pina ground. Now wall ball, another miss by wicket keeper. Right up into the block hole. Dot ball ends the over. 7 overs gone. 38 remains on the board. 6 balls left. 38 to get here. ಕೊನೆ 6 ಎಸೆತಗಳಿಗೆ 38 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಲೋ, ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಶೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ರುದ್ರೇಗೌಡರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಪರಿಸರದ ಮತ್ತವರ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮೇಗೌಡರು ಹಾಗೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ರುದ್ರೇಗೌಡರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೊನೆ 6 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 38 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಸರದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಆದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ರುದ್ರೇಗೌಡರನ್ನ ಹಾರವನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಕ್ಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮೇಗೌಡರು, ಸೃಷ್ಟಿ ಲೋಕೇಶ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ಮಿತ್ರರು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 6 to go, 38 to get. Milena for the last over from Venus Sri Lankan side. Short delivery, nicely applied on the onside. And that occasion, he finds the field placement as well. Right, still 5 balls to go. 37 from 5 balls. It's been absolutely magnificent play for the Venus Sri Lankan team. One team from Chhattisgarh, Madhya Pradesh into the final. Another team from Sri Lanka, Venus. They are actually getting ready for the final tickets. 5 balls to go, 37 away. 5 ಎಸೆತಗಳು 37ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. Wall ball, don't delivery on that occasion. And we are thanking to the Manju Kunigal as well. He's been a part of this cricket tournament as a commentator. And he had a bit of a chit-chat show with the sponsors and viewers as well. That a dot delivery. ಕೊನೆಯ 3 ಎಸೆತಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 37ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 3 balls to go in the match. In the second semi-final match, 37 to get. Glorious performance by the Sri Lankan Venus team here. Good committed, clinical performance by them. Paulwell here, another dot delivery right into the black hole. Great bowling performance. The performance with a solid body language kept throughout the tournament by them. And mentally they proved them something better. Mentally they proved very strong and with a lot of good physical fitness as well. Oh, deliberately done on that occasion, offering no strike. So last ball of the match to come now. Final ball is coming up. And I would like to thank our friends Sports and Cultural Association for organizing such a fabulous, memorable, unforgettable 4-day cricket festival here at Pina ground. White signal by the umpire. Still last ball to go. Legal delivery to come. Johnson Kundapura. Superb performance throughout the tournament. But today in this semi-final match against the Sri Lankan Venus team, a little struggle with the bowling court. Obviously, the sad faces in the players' stand. That one lofted on the onside and right. That's the end of the game here. And boundary signal by the umpire. That is the end of the semi-final match. And Venus Sri Lanka team into the final. Enter the final. They will be playing against Balaji Tadu 11 Chhattisgarh Madhya Pradesh team. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಶೆ ನಡೆದಂತ ಪರಿಮಿತ ಓವರ್ಗಳ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಪ್ಪಿನ
ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ, ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದಂತ ಬಾಲಾಜಿ ನಾನಿ 11 ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಟಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಟಾಸ್ ಮೊದಲಾಗಿ ಇವಾಗಲೇ ನಡೆಸ್ತೇವೆ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬ್ರೇಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಾಲಾಜಿ ನಾನಿ 11 ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಮತ್ತು ವೇನಸ್ ಬೊಲೋಗ್ನಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವಾಗಲೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸೋತಂತ ಜಾನ್ಸನ್ ಕುಂದಾಪುರ ತಂಡ ಕೂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿನ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಾಯಕರನ್ನು ಕೇಳಿ